Assalamu alaikum, dear students, and welcome back to another poetry lesson on The Brook, penned down by Alfred Lord Tennyson. This poem is a 13 stanza ballad poem that is separated into sets of 4 lines known as quatrains. These quatrains follow a simple rhyme scheme of AB, AB, CD, CD. प्यारे बच्चों, ये जो पोएम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने आपके लिए लिखी है, इसका नाम है द ब्रूक। इसमें कुल 13 स्टंजा है और इसमें हर एक स्टंजा में क्वार्ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है। दैट मीन्स ईच स्टंजा कंसिस्ट्स ऑफ 4 लाइन्स। हर एक स्टंजा में 4 लाइन्स हैं, तो जो ये स्टंजा बनता है 4 लाइन्स का स्टंजा, उसको हम कहते हैं क्वार्ट्रेन। तो इस क्वार्ट्रेन जो ये क्वार्ट्रेन है, इसमें जो राइम स्कीम है, एक क्वार्ट्रेन में राइम स्कीम है ए बी और दूसरे क्वार्ट्रेन में जो राइम स्कीम है, द नेक्स्ट क्वार्ट्रेन फॉलोज द राइम स्कीम ऑफ सी डी। So let us make me clear through examples. So let's have a look at the very first stanza of the poem. I come from haunts of coot and hern, I make a sudden sally, and sparkle out among the fern to be cut down a valley. Dear students, you will notice here that this is a quatrain, means it is made up of 4 lines. I come from haunts of coot and hern, this is the first line. I make a sudden sally, this is the second line. And sparkle out among the fern, this is the third line. To bicker down a valley, this is the fourth line. So this is the first stanza and it contains 4 lines, so we can say it is a quatrain. Now let's have a look at the rhyme scheme of this quatrain. इस quatrain में अब हम rhyme scheme देखेंगे, इसमें कौन सी rhyme scheme apply हुई है। Dear students, when we talk about the rhyme scheme of the poem, whatever the poem may be, जब हम poem में rhyme scheme की बात करते हैं, तो हम कैसे राइम स्कीम को एनालाइज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, द एंडिंग साउंड ऑफ ईच लाइन ऑफ वर्स, यहाँ पर हम पहली लाइन देखेंगे, आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न। तो जो लास्ट साउंड इसमें निकलता है, जो लास्ट साउंड इसमें हर्न, तो हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देते हैं, like A, B, C, D and so on। तो यहाँ पर जो पहली लाइन है, उसमें जो लास्ट साउंड है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद लेटर A। अब जो नेक्स्ट लाइन है, इफ इट इज सेम लाइक द फर्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल इफ द लास्ट साउंड इन द second line rhymes with the last sound of the first line, we say that they rhyme each other। अगर पहला जो मिसरा है, पहली जो लाइन है, अगर उसमें लास्ट साउंड आइडेंटिकल है with the second line, तो हम कहेंगे they rhyme each other। अगर नहीं है तो हम कहेंगे they don't rhyme each other। अब देखते हैं दूसरी लाइन पर, I make a sudden sally। तो यहाँ पर जो साउंड निकलता है सैली एंड हर्न, दे डोंट राइम ईच अदर। तो यहाँ पर साउंड चेंज हो गया, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद बी, बिकॉज इट इज़ नॉट सेम लाइक हर्न। ये हर्न जैसा नहीं है साउंड, तो ये बन गया पहला ए, दूसरा बी। अब तीसरा हम देखेंगे, एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न। यहाँ पर साउंड आ गया फर्न एंड हर्न राइम ईच अदर। फर्न और हर्न जो है, ये आपस में राइम करते हैं, इनके दे हैव आइडेंटिकल साउंड्स। तो यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट किया है
ए से, तो ये भी बन गया यहाँ पर ए, बिकॉज दे राइम ईच अदर। तो राइमिंग वर्ड्स को हम एक ही लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, टू बिको डाउन अ वैली, यहाँ पर वैली है, तो यहाँ पर देखिए सैली, तो इसको रिप्रेजेंट किया बी से, इसको भी, वैली को भी रिप्रेजेंट करेंगे हम बी से। तो अब देखिए राइम स्कीम क्या आ गई इस स्टैंजा की, ए बी A B. So the rhyme scheme of the first stanza of this poem is A B. So in the same way, the next would be C D because the sound will change. So here is a picture of the brook. It is very beautiful, and it describes the scenes of nature, especially the countryside. You can also feel the music of the brook. Feel the rhythm. So now let us summarize the poem, The Brook. The Brook describes the theme of mortality, eternity, and nature through memorable images of a brook's journey through the countryside. The speaker of the poem is a brook itself. The brook narrates the story of its life as if recounting human experience. Tennyson describes the progression of the brook down the hills, through valleys, around farms, and finally into a larger river. The poem's most notable characteristic is its refrain. For men may come and men may go, but I go on forever. प्यारे बच्चों, ये जो ब्रूक है, it describes the theme of mortality, eternity, and nature. In this poem, you will find that the poet describes the nature, the different scenes of the nature as you have watched just now, that how beautiful is this nature. So he describes the different scenes of nature, especially the countryside, and mortality. You know that human life is short-lived. आपको पता है कि जो इंसान की ज़िंदगी है, जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश वी से द मैन इज़ मॉर्टल. कश्मीरी में भी हम कहते हैं कभी कभार बंच बशर. दैट मीन्स मैन इज़ लाइकली टू डाई. इंसान आता है और फिर मर जाता है. इट इज़ नेचर. Eternity. Here it represents the constant or continuity of the brook. Brook continues its journey. It never stops. ये जो brook है, ये कभी रुकता नहीं है. It goes on and forever. ये हमेशा चलता रहता है. अब जो ब्रूक की जर्नी है, ब्रूक की जर्नी जो है, ब्रूक का जो सफ़र है, इस नदी, ब्रूक कहते हैं नदी को, ये नदी का जो सफ़र है, ये पोएट कैसे डिस्क्राइब करता है. इसमें पोएट जर्नी ब्रूक को ही स्पीकर बनाता है. ब्रूक को ही इसमें स्पीकर बनाता है. द स्पीकर ऑफ द पोएम इज़ अ ब्रूक इटसेल्फ. ये खुद स्पीकर है, ये खुद बोलता है, ब्रूक खुद बोलता है. द ब्रूक नरेट्स द स्टोरी ऑफ इट्स लाइफ एज इफ रिकाउंटिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस. ब्रूक ऐसे अपना सफ़र, ज़िंदगी का सफ़र बयान करता है जैसे एक इंसान अपनी ज़िंदगी को पेश करता है.
Tennyson describes the progression of the brook down the hills, through valleys, around farms and finally into a larger river. तो अगर आप देखेंगे इस पोएम में, ये जो टेनिसन है ये ब्रूक के सफ़र को ऐसे बयान करता है जैसे ब्रूक कहता है that I was first at once a simple body of water before I started to rush in. I started forward in rush. तो यहाँ पर देखिए पहाड़ियों से आता है, थ्रू वैलीज, फिर वादियों में से उसका गुज़र होता है, अराउंड फॉर्म्स एंड फाइनली जॉइनस अ लार्जर रिवर, और लास्ट पर ये दरिया में मदगम हो जाता है. द पोएम्स मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट्स रेफ्रेन. अगर आप देखेंगे इस पोएम में जो अहम हिस्सा है वो इसका रेफ्रेन है, विच इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स. For men may come and men may go, but I go on forever. ये कहता है that man is mortal, man comes and dies, but I go on forever. तो ये कहता है, ब्रूक कहता है that I live forever, I am eternal, मैं लाफानी हूँ, मैं कभी ख़त्म होने वाला नहीं हूँ. Now there are some literary devices used in the poem by Tennyson. These include metaphor, alliteration, and imagery. However, imagery is the most important technique used in the Brook. इसमें जो poetic devices use हुए हैं उसमें metaphor, alliteration है and imagery है, onomatopoeia है, लेकिन इसमें जो अहम टेक्निक इसने इस्तेमाल की है वो है imagery. Imagery किसको कहते हैं? Imagery refers to the elements of a poem that engage a reader's sense. Imagery हम किसको कहते हैं? प्यारे बच्चों, इमेजरी पोएम के वो एलिमेंट्स होते हैं, वो हिस्से होते हैं जो आपके सेंसेस को टच करें. अगर हम इमेज देखेंगे, इमेज इज रिलेटेड टू विजुअल साइड थिंग दैट अ रीडर कैन इमेजिन सीइंग. इमेज हम जनरली कहते हैं जो हमारी आंखों को भाए और कोई चीज़ होगा जो रीडर सोचता है, फिर अपने दिमाग में उसको लाता है और फील करता है जैसे मैं उसको देखता हूँ. बट इमेजरी इज़ मच मोर दैन दैट. लेकिन इमेजरी है जो है, इट इज़ मच मोर दैन दैट, वो इससे ज़्यादा है. इमेजरी सिंपली मीन्स दैट वट एवर वी परसीव थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, वी आर हैविंग 5 सेंस ऑर्गन्स. तो जो हम सेंस ऑर्गन्स से फील करते हैं उसको हम कहते हैं इमेजरी. एंड द पोएट हैज़ यूज्ड रिच इमेजरी इन द पोएम द ब्रूक. इसमें इमेजरी यूज़ हुई है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम फिर देखेंगे, आई कम फ्रॉम हार्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न. यहाँ पर क्या दिखता है? आई कम फ्रॉम हार्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न. कूट एंड हर्न जो है, कूट एंड हर्न, these are the two different kinds of birds. These are two different kinds of birds which the poet has used here. These are called visual imagery. When the poet used these words, we think of the birds and we feel like watching them. So it is called a visual imagery. In the same way, I make a sudden sally. A sudden sally. It reminds us of some music, of some sound, that we call it sound imagery. Now let's have a look at another term, another poetic term or literary device, that is called personification. Dear students, personification is a figure of speech in which objects, things or animals are given human characteristics. For example, ये personification क्या है?
पर्सोनिफिकेशन हम कहते हैं एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें चीज़ें जो हैं या जानवर जो हैं उनको हम ह्यूमन क्वालिटी देते हैं। जैसे वो ह्यूमन दे बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स when objects or things or animals behave like human beings। इंसानों की तरह जब वो बर्ताव करेंगे inanimate objects or things or animals, जब ये इंसानों की तरह बिहेव करेंगे तो हम कहते हैं इसको personification। एग्जाम्पल्स हम समझाएंगे। एग्जाम्पल थ्रू एग्जाम्पल्स इन प्लान लैंग्वेज, आम फार्म लैंग्वेज में, आम फार्म ज़बान में हम कहते हैं आई टेक एन ओफल पिक्चर, मैंने एक खूबसूरत तस्वीर ली या एक खूबसूरत तस्वीर खींची। तो जब हम इसको पर्सोनिफाई करेंगे तो जनरली वी टेक पिक्चर्स थ्रू कैमरास, हम कैमरा से पिक्चर लेते हैं। तो अब हम कैमरा को पर्सोनिफाई करेंगे। कैसे करेंगे? द कैमरा हेट्स मी, द कैमरा हेट्स मी। यहाँ पर कैमरा जो है इट बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग। How? Because it hates something. However, you know that a camera is an inanimate object. Camera is not a living object. Here, the camera hates. It is the human beings that hate each other, that love each other. But the camera cannot love or hate someone. So here camera has been personified. In the same way, in the poem The Brook, an inanimate object, that is the brook, it has been personified. Another poetic device which is used by Tennyson in the poem is onomatopoeia. Onomatopoeia is related to sound. Onomatopoeia is related to sound, like buzzing of the bees, splash, ding dong. In the same way, you can hear the sound. So, thank you for watching.